हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हेल्थ क्यू। आज के इस लाइव वीडियो सेशन में मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देना चाहूँगी। तो मैं कोई टॉपिक पे पर्टिकुलरली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे लिए रिलेटेड टू बेल्स पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी या लो बैक पेन, आई वुड जस्ट ट्राई टू एड्रेस देम। सो आज का लाइव सेशन कंप्लीटली क्यू एंड ए। माफ़ी चाहती हूँ लेट होने के लिए, क्योंकि थोड़े से टेक्निकल एरर आ रहे थे। लॉगिन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लॉगिन नहीं हो पा रहा था। So finally, I'm again live. So feel free to fill up the chat box. आप अपने क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट कीजिए ताकि मैं उसको पढ़ के आप उसके जवाब दे सकूं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। जो भी सवाल पहले आता है उसको मैं पहले लूंगी और रेलेवेंट क्वेश्चंस को सीमित रखने की कोशिश करूंगी कि जो भी है सिनकाइनेसिस, बेल्स पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी और लो बैक पेन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है इसके बारे में हम बात करें। हेलो कुवैत एयरवेज, गुड आफ्टरनून। यस फ्रेंड्स, मेरी वेबसाइट भी अभी मैंने रिसेंटली लॉन्च की है, जिसका नाम है www.healthqrehab.com। इसमें भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं लोड करने की कोशिश करूंगी बेल्स पाल्सी के रिलेटेड। तो इफ यू वांट यू कैन विजिट दैट वेबसाइट एंड रीड दैट एज वेल। ओह हेलो, हेलो मजीद, थैंक यू सो मच। इट्स कुवैत एयरवेज लिखा था इसलिए समझ नहीं पाई कि आप हो। थैंक यू मजीद। गुड आफ्टरनून राहुल। थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड्स, सो कोई भी सवाल हो आपको आपके हेल्थ के रिलेटेड, स्पेशली फ्रॉम सनकाइनेसिस, तो प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन। यस मजीद, मैं जानती हूँ आपको सनकाइनेसिस की दिक्कत है। तो आई जस्ट ट्राई टू ब्रीफ अबाउट दैट कि सिनकाइनेसिस को अगर हमें कम करना है तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो हमारे मसल्स मैक्सिमम हमें रिलैक्स रखने हैं। इसलिए मैंने देखा है सभी लोग ये गलती करते हैं कि अफेक्टेड साइड में और ज़्यादा च्युइंग गम और ज़्यादा चबाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको सिनकाइनेसिस है और अगर आप चबाने की कोशिश करते हो तो उससे सिनकाइनेसिस बढ़ेगा। इसलिए प्लीज़ यहाँ आपका जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे ज़्यादा खाना मत चबाइए। सॉफ्ट फूड होता है उसी को उस तरफ से चबाइए, ठीक है? दूसरी चीज़, अपने एक्सप्रेशंस को कम करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्माइल करते हैं, तो ये स्माइल के बदले छोटी स्माइल। जितने आप छोटे एक्सप्रेशन करोगे, उतना ये बेहतर रहेगा। और जो तीसरी चीज़ है, वो है कि आपको आपके जो नेचुरल एक्सप्रेशन है, उस पे ज़्यादा काम करना है। मतलब जो भी एक्सरसाइज़ करते हैं, उसमें रियल लाइफ़ सिनेरियो को सोच के उसके रिलेटेड एक्सरसाइज़ करने की कोशिश करें। ऑलराइट। अ सुनीता का क्वेश्चन है, मैम मेरी बेटी को बेटा 19 मंथ का हो गया है, स्पास्टिक सीपी है। ओके। हाय मैम, नाइस टू सी यू, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू। यस, बात नहीं, बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। ओके। सो अगर सिरकाइडिसिस का जो बच्चा है, सॉरी, जिसको सेरिब्रल पाल्सी हुआ है, और अगर बच्चा बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, नो मैटर व्हाट इज द एज, तो जो सबसे इमीडिएट डेवलपमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल नेक रेजिंग या गर्दन पकड़ना, ये सबसे पहली एक माइलस्टोन कही जाती है। उसके बाद बच्चा रोल करना शुरू करता है, उसके बाद बच्चा बैठना शुरू करता है। तो अगर बच्चा क्रॉलिंग पोजीशन में नहीं आ पाता है, तभी वो बैठ नहीं पा रहा है। इसलिए आपको उसकी क्रॉलिंग पे फोकस करना है कि बच्चा जो है वो घोड़े वाली पोजीशन को मेंटेन करके रख सके। उसकी एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। तो उससे आप देखोगे कि अराउंड 2 टू 3 मंथ्स बच्चा वो एबिलिटी डेवलप कर लेता है। जब वो बच्चा एबिलिटी डेवलप कर लेता है, फिर ही आप बैठने की प्रैक्टिस पे फोकस करें। फूड रिक्वायर्ड टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन द बोन और इन लोअर वन साइड बैक। फूड्स में मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये 2 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपने लेने चाहिए टू अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए।
सिनकाइनेसिस एक बीमारी नहीं है, इसलिए उसका इलाज नहीं है। सिनकाइनेसिस एक आदत है, इसलिए एक आदत को जैसे तोड़ी जा सकती है, वैसे ही सिनकाइनेसिस की आदत को तोड़ी जा सकती है। लेकिन वो कभी भी 100% नहीं जाती क्योंकि वो एक आदत है, ठीक है? तो आपको हमेशा एक रिस्क रहता है कि आप जब भी स्ट्रेस में होते हो, ज़्यादा बात करते हो, ज़्यादा फ़ोर्सफुल एक्सप्रेशन करते हो, तो थोड़ा बहुत सिनकाइनेसिस आ जाएगा। इसलिए मैं उसको इस तरीके से कह सकती हूँ कि 60 टू 70% इम्प्रूवमेंट सिनकाइनेसिस में आ सकता है, बट 100% बिल्कुल फेस पहले जैसा हो, ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अजय पटेल पैरालिसिस है, एज 34, चल तो सकता हूँ लेकिन हाथ पे कोई रिकवरी नहीं है, लेफ्ट साइड हुआ है, 4 मंथ्स हो गए। मिस्टर अजय पटेल, लाइफ लॉन्ग आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप धीरे-धीरे रिकवर हो सकते हो। इवन आपके हाथ में भी आपको चाहिए कि आप ज़्यादा मिरर एक्सरसाइज करें। मतलब कि आपका जो नॉर्मल साइड है उसको सामने रखें और उसी लेवल पे आपका दूसरा हाथ को रखें और बीच में एक आईना रखें, मिरर रखें, ठीक है? अपने नॉर्मल साइड के हाथों को मूव कीजिए और आईने में देखते रहिए। धीरे-धीरे इस हाथ में भी मूवमेंट्स डेवलप होते हैं। इसको मिरर थेरेपी कहते हैं। मैं बहुत ही जल्द इस पे एक वीडियो लेके आऊँगी ताकि आप लोग घर पे इस प्रैक्टिस को कर सकें। और एक सवाल है, आज सुबह से मेरे नेक पकड़ गया है, रिलीफ के लिए क्या करूँ? अगर नेक में, गर्दन में अगर आपको स्पाज़म आता है, तो बेस्ट चीज़ है वो आप कोई भी वाटर बॉटल लें, इसमें ठंडा पानी भरें, अगर एक्यूट पेन है तो, और उसको आप अगर गर्दन पे इस तरीके से गर्दन पे इस तरीके से रखते हैं, तो उससे आपका जो पेन है, वो कम आ जाता है, अगर गर्दन अकड़ गई है तो, दिस वे। Okay, ma'am, I have lower one side back pain. How can I recover from this? As I said, Mr. Rahul, that if you have lower back pain, it's because of three important reasons that your muscles are in the spasm. The second thing is your ergonomics, or else you can say the way you sit, the way you stand, the way you walk is not proper, and you are. I'm not sure you are exercising or not, but the exercising are not proper. Okay, so the first thing that you should do is if you are having lower back pain, then you should apply cold pack. If your pain is less than 7 days old, if your pain is older than 7 days, then you should take hot fermentation. The second thing is your sleeping posture, sitting posture. Okay, so if you're sitting, for example, if you are sitting on a chair, you should make sure that there is some back support on the lower back region. So you can keep an extra pillow for that. While sleeping on the bed, keep one pillow in front of you, rest your leg over it, and then sleep. Third, while walking, make sure you don't walk much, and if you walk, then make sure that you are standing erect. You don't hunch forward, like your tummy should not move forward. So, there are few things that you should keep in mind. And when it comes to exercises, you should not do any kind of strenuous exercise. All you need to do is gentle range of motion exercise. For example, forward bending like this, side to side twisting, and then side to side. This is what you need to do for gradually reducing your lower back pain. You can also use some machines like tens, pocket tens, which will help you to relieve your pain for a longer run. I hope this helps. Okay, then Sunita Kivad. I'm 60 plus in my right upper side gums feel pain since 2 weeks. Please guide me what to do, Riaz Ahmed. Riaz, if it is dental related issues, I'm not sure I would be able to help you because I'm not a dentist, I'm a physiotherapist. Uh, Zadi Chips, what is giving problem for this disease? I didn't got your question, Zandi. Okay. Bell's palsy recovery time around 3 months, but some people take more than that, so you have to be patient. Hello, ma'am. I'm Raj. I'm currently studying BP. Ma'am, my question is why Bell's palsy mostly often seen in pregnant women? Yeah. So Bell's palsy is mostly seen in pregnant women, especially among the women who have the tendency of higher blood pressure. The reason being there is an overall edematous changes that are happening, and the vascular movements or else the blood supply is also somewhere affected, and the blood supply is not properly, or as you can say, not speedy the way
actually they are. So this vascular pressure causes pressure on the facial nerve as well, and this leads to Bell's palsy. But still, this is not a very clear cause. Still, the research is going on to figure out what is the main reason. But this is the basic hypothesis which is kept in mind why pregnant women experience Bell's palsy. Okay, Shweta Shukla. Hey, ma'am, I am also a physiotherapist. I love to watch your videos, especially about Bell's palsy. Thank you so much. You have very deep knowledge about it. Thank you for making the videos on sin kindnesses. Thank you, Shweta. Thank you so much for the appreciation. All right, so I think I've answered most of the question in this playlist. If you guys have got any other question, feel free to reach out. I will keep this live on for another 3 to 4 minutes, and then we will just I'll just close the session. So if you have any questions, you can type in here. And I'm really sorry for not posting that regularly these days. I'm trying my best due to work related issues. Sometimes I just miss, but I'm working on that because the patients are more, plus videos are there. So it gets a little bit overwhelming sometimes, but I'm trying to take help. I'm trying to hire new people who can help me out in making videos. So as soon as those things comes into the picture, the videos would be much more regular. Okay, Priya is there. My patient has got spondylolisthesis, disc bulge, flavum, hypertrophy. What exercises to be done? Priya, if you are a physiotherapist, don't ever, I would suggest, don't ask questions in this manner. The reason being, even though these are the diagnosis, but you have to assess the patient clinically, and basis that only we should give the exercises. All right. And if you are not a physiotherapist, if you are just a patient or else some of your relative is suffering from all this thing, I would suggest instead of just going into the exercise, getting a clear understanding about what is the clinical picture. Based on that only, the exercises should be given. जुंग बजवा मेघना मैम आई 1 मंथ पहले मेरा बेल्स पाल्सी हुई थी अभी ठीक अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट मूवमेंट नहीं है मेडिकेशन भी ली है थेरेपी भी सर बेल्स पाल्सी 3 से भी अधिक महीने का समय ले सकती है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पेशेंट रहिए बहुत ज्यादा मूवमेंट्स करने की कोशिश ना करें जैसे-जैसे आपके नर्व पे से प्रेशर उठेगा, धीरे-धीरे नर्व हील होनी शुरू हो जाएँगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अभी सिर्फ़ 1 महीना है, कई लोगों को 3 महीने के बाद भी मूवमेंट्स आते हैं, इट्स एब्सोल्यूटली नॉर्मल। प्लीज़ एक ही चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बार-बार आईने में जाके चेक मत कीजिए कि आपके मूवमेंट्स आ रहे हैं या नहीं। फ़ोर्स मत कीजिए खुद को कि ये साइड को मैं हिलाऊँ, च्युइंग गम्स को ज़्यादा मत चबाइए इस समय अगर मूवमेंट्स नहीं है तो। और हो सके उतना मसाज कीजिए, गर्म पानी की सिकाई कीजिए और सोइए ज़्यादा। Mr. Dr. Manoj, ma'am, how much hot fermentation over trunk help in recovering from facial palsy along with exercises. See, facial palsy recovery has nothing to do with exercise. To be very honest, with exercise, what we do is we are just trying to train the muscles to move in the right direction. Hot fermentation prevents the clocking of the chemical nutrients and all that stuff. So hot fermentation kinds of relaxes the muscle. The tiredness that comes along with paralyzed muscle that goes, so actually, the medicines are the ones that are working on healing at the nerve level. So that happens on its own. Hot fermentation will just help the patient to stay away from pain, stay away from muscle tightness, stay away from pain. Sorry, not pain. I would say the lack of lymphatic drainage. So for that reason, you should give hot fermentation. Satish, I have completed internship with physio. Give me some advice, ma'am. I don't have correct knowledge. What area? I'm so sorry, Satish. This is not my forte. See, I believe every human being is different. Every physiotherapist is different. I don't owe any right to tell you which direction or which side you should go. It absolutely depends on what is your focus, what is your interest. Every field of physiotherapy has huge opportunity. You can just venture into it. You will be only successful when you work towards it. There is no go about that.
Okay, Pasha and Amnar, what is the difference between slip disc and disc bulge? So, slip disc and disc bulge is almost the same if you look clinically. So, there's not much of that kind of difference there. Slip disc is usually when a PIVD happens or as prolapse intervertebral disc happens. So then they say it as a slip disc. Many people say it in those terms, but actually there is a bulge of disc that is happening inside. Priya, hi ma'am, my son 5-year-old. Before 10 months, he done tendon release surgery. Now little better. He hold anything to stand but can't stand separately. Please give some exercise to stand down. Priya, see, even though you have done tendon release, okay, tendon release is done just to improve the length of a muscle which has gone tightened or contracted. It doesn't guarantee that the child will stand. All right. Now, coming to the exercises, what you need to do is you need to make sure that the child does a lot of sit to stand activity. Okay, so make your child to sit on the stool with his leg well supported on the floor. You can give him AFO, ankle foot orthosis. You make him wear that, and then you make him do lots of sit to stand activity. That will increase the strength of his quadricep or your front thigh muscles, his calf muscle, and the back muscle. What he need is a good strength of the back muscle, the lower back muscles, the hip muscles, the front thigh muscle, and calf muscle, which are the muscles responsible for a human being to stand erect. Okay, then the next question is Satish Mohan. Is MPT essential for my clinical practice, ma'am? Your videos are really motivating. Your videos you keep inspiring. Thank you. See, MPT, I would suggest you should do. To my experience, because our field of physiotherapy is such a vast field. When you do MPT, you get different level of specialization in the domain which you feel is good, and you learn to read research papers, which is not taught that much in detail in BPT, which is the core or is the basis of clinical practice, I believe. So I think, and I would suggest every physio who wants to go into clinical practice space to do MPT, especially in the domain which is of your own interest. So, for example, if you have interest in neuro rehab like me, then I would suggest don't go for sports physiotherapy or ortho physiotherapy MPT. Make sure that you do MPT in neurosciences only. Okay. Then the next question, मैम डेली फीड्स आता है बच्चे को स्पास्टिक सीपी है इम्प्रूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है क्या? यस, अगर फिट्स है तो इम्प्रूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है सुनीता। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डॉक्टर को दिखा के उसकी दवाई शुरू करें क्योंकि फिट्स के लिए दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू राहुल। थैंक्स मैम। Please put some videos. I really want from you. Sure, Priya, I'll try to make videos. My problem with making videos in CP is since I'm doing online therapies these days, I don't have a subject or else a model child on him I can demonstrate the exercises. I'll try my best to make some. Give me some time. The videos have been little irregular these days. I will try to make them as regular as possible in upcoming days. I'm working towards it. I'm just trying to fix my time between patients and YouTube and everything. As things are settled down, you will see much more informative videos on this channel. I hope that helps. All right, then, I guess we are done with today's session. If you have got any questions, feel free to put it in the comments, email me on meghna@mentohealthconnect.com, or else you can also take a video consultation with me. On that note, I'll end this video here. Thank you. Bye bye.